Aditi, Rajendra. Namaste, everybody. Namaste. Welcome to this week's Happy Minds. This is Happy Minds number 1192. And those who have just joined me on YouTube, welcome to this week's Happy Minds. And this is Happy Minds number 1192. Just 8 more to go. And we touch the 1200th mark. And I think numbers are just numbers, but then कभी कभार क्या होता है numbers चाहिए होते हैं to make you understand the kind of journey you have taken. होता ना कि आप चलते हो, you go for a marathon, you go for a jog, and as each and every kilometer you pass by, आपको ऐसा hit होता है, realize होता है that it's not bad, it's a lovely journey which I've had. So 1200 happy minds over 25, 27 years. It's not bad. So I can once in a while, look at the numbers and I pat my back with thousands and thousands across India, and even from outside, they have been there with me. And God bless you all for being there for these wonderful sessions. And जिन्होंने पहली बार join किया है, just want to share with you what Happy Minds is. First of all, welcome to Happy Minds. ये कुछ mad, पागल, दीवाने लोगों का एक satsang होता है every Saturday morning. And people come from wherever they are traveling, they join in, they are walking, they join in, sometimes they're driving and they have it on the audio side and they log in. So people log in wherever they are, and I assume that people are not logging in from the toilets, but they're logging in from wherever they are. And every Saturday हम लोग मिलते हैं सुबह. So we start with meditation, and then we have a round of success stories, and then I share what I want to share. और आज का subject है बड़ा, I was thinking about this subject, and it's quite an exciting subject. एक structure है उसका. I'll share with you as to how we can go about achieving a lot more than what we have been able to achieve. और वो उसका एक structure है, तो उस structure को हमने follow किया, तो मुझे लगता है achievement जो है, जो मेहनत है वो तो होगी, but मेहनत आपकी रंग लाएगी. That's what I want to share today with all of you. So we started with meditation, and every time when I meditate, I always pray, and I always feel like telling all of you that आप इसको miss नहीं करो. और miss करना बड़ा आसान है meditation को, because कोई demand नहीं है, कोई हमारे सर पे बंदूक रख के नहीं बैठा हुआ है, या कोई meditation ना करके जिंदगी में बहुत कुछ हम खो जाएंगे या खो लेंगे, ऐसा हमें लगता नहीं है. So there is no pressure for us to take out time. But let me tell you, if you start meditating and if you start working on yourself in this direction, a time will come when you will actually ask question to yourself कि मैं इसके बिना मैं जी कैसे रहा था, and how much your efficiency will improve, how much your quality of life will improve, how much your ability to absorb more from the world will improve, how much you can actually be more calm, composed in your life. आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, because हमने कभी वो देखा नहीं होता है, किया नहीं होता है. And that's the power of happy minds. My throat is on the verge of improvement, so I will have this आज थोड़ा सा. I had some speaking assignments last week, and my throat is improving. So I'll come on to the meditation side. But welcome everybody, and those who have joined me for the first time, जिन्होंने पहली बार join किया, you can just type in first, and you can type in the city you're from, so मुझे मालूम पड़ेगा आप कहाँ से आए. नहीं क्या very चुप है. नमस्ते. Okay, संतोष. Namaste everybody. Namaste. चलो, good. First time from Vadodara. Okay, Mrunal, welcome to Happy Minds. Welcome to the community, to the fraternity of mad, crazy guys here this very morning. Sanjay is from Pune. Rajesh, first time from Pune. Welcome, Rajesh. Welcome everybody. जो पहली बार join कर रहे हैं, you can just type in first and the city you're from. So पहली बार तो स्वागत बनता है. पहली बार तो आपका welcome बनता है. Then you become a part of the family. Then you welcome everybody else. So I was talking about कि meditation करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई problem नहीं है, कोई pressure नहीं है अपने ऊपर. But what to understand, this one very simple thing जो मैंने लाइफ में जाने अनजाने में पहले बहुत सीख लिया, समझ लिया, and that has been the driving light or driving force for me for the last many years. कि कोई चीज है जो करने योग्य है ना, तो उसको कर डालो.
कोई भी चीज जो करने योग्य है, बिफोर यू डिस्कार्ड इट, बिफोर यू डिनाई इट, बिफोर यू काइंड ऑफ थ्रो इट इन द डस्टबिन, वो कर डालो, उसके बाद उसको फेंक देना, करने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देना, लेकिन करने से पहले उसको डिस्कार्ड नहीं करो। तो बहुत सी चीजें हम लोग पिकअप ही नहीं करते, एंड वी फॉर्म एन ओपिनियन और वी हैव एन ओपिनियन अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन इज ऑल्सो वन, ध्यान इज ऑल्सो वन थिंग विच वी हैव मिस्ड। एंड बड़े सरप्राइजिंग है कि जिस कल्चर ने दुनिया को ध्यान दिया, उसी को ध्यान पे ध्यान नहीं है। तो बड़ा सरप्राइजिंग है। द वर्ल्ड ओवर इज गोइंग मैड अबाउट मेडिटेशन, द वर्ल्ड इज गोइंग क्रेजी अबाउट योगा, एंड हियर इंडियंस आर क्रेजी अबाउट God knows what. So that's the challenge which we have. और जब तक आपने उसका अनुभव नहीं किया होता ना, तो आपकी उसकी वैल्यू भी नहीं होती है। एंड एक बोलता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बार तो अच्छी बॉडी बना लो यार। एक बार अच्छी बॉडी बन गई ना, आई एम नॉट सेइंग यू मेंटेन दैट बॉडी, यू हैव दैट बॉडी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स ओके, बट एक बार तो अच्छी बॉडी बना लो। लाइफ में मरने से पहले एक बार तो ऐसा हो जाए कि बॉडी आपकी आपके हिसाब से हो। तो फिर क्या होगा, जब आपने वो एक बॉडी का एक्सपीरियंस कर लिया जो अच्छी बॉडी है आपकी, तो जब आपकी बॉडी उससे नीचे लेवल पे आएगी, तो आपको कम से कम अपने मन में ये तो रहेगा, यार ऐसी बॉडी हुआ करती थी। और वैसी बॉडी बनाने की चाह तो फिर मन में रहेगी, चाहे बने ना बने दोबारा, लेकिन आपके पास अपना मापदंड, अपना यार्डस्टिक तो है। तो जब हमने अच्छी बॉडी नहीं बनाई होती है, लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल बॉडी, आई कैन यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग एल्स। जब हमने एक बार अच्छी बॉडी नहीं बनाई होती है, तो अच्छी बॉडी ना होने का गम भी हमें नहीं। इन द सेम वे आई टेल एंटरप्रेन्योर्स, अभी मेरा हमारा विजन सेशन हुआ एंड वी केम बैक एंड आई वी वर we had the most awesome time those 2 days in the vision session. And I have this same thing for the entrepreneurs कि एक बार तो अच्छे ढंग से बिजनेस कर ले, एक बार, चाहे उसके बाद मत करना, go back to your own whimsical ways of doing business, but एक बार तो अच्छा बिजनेस कर लो। फिर क्या होगा, जब आपने एक बार अनुभव कर लिया अच्छे बिजनेस करने का, that becomes your benchmark, that becomes your driving force, और वो आपको बार बार मजबूर करेगा अच्छा बनने के लिए। क्योंकि आपके मन में बात है ना कि ऐसा भी मैंने काम किया था, अपने अनुभव में एक बार ले आओ। और जिन्होंने अच्छा बिजनेस नहीं किया है कभी, उनको अच्छा बिजनेस ना करने का गम कभी नहीं हो। एक बार तो रिश्तों में इतना बढ़िया काम कर लो कि यू यू हैव अ फ्यू रिलेशनशिप व्हिच आर सो ऑसम रिलेशनशिप्स। तो जब आपने अच्छे रिश्ते मेंटेन किए होते हैं, तो आपको फिर अच्छे रिश्ते ना मेंटेन करने की भी एक समझ आएगी। तो एब्सेंस ऑफ ग्रेट थिंग्स इन लाइफ हैज मेड अस फील कि यार इसके बिना भी चल सकती है। तो कभी अच्छी बॉडी ना हो, तो अच्छी बॉडी ना होने का गम भी नहीं होता हमें। मैं कहता कम से कम गम ड्राइव करे ना। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जिन्होंने मेडिटेशन नहीं किया होता है, तो उनको मेडिटेशन ना करने का भी कभी गम नहीं होता, कभी उनका ऐसा रियलाइजेशन नहीं होता। एक बार तो अपने आप को डालो ना उस स्टेट में, where you sit in silence and you close your eyes and just cut off from the world. And the world is all a myth. It's all here actually. If you were to see, world udhar nahi hai, world idhar hi hai. Because everything you see is here. Right? And what you see is what you, based on what you are. You don't see the way the world is. You see the way you are. And that's why different people have different responses, reactions to the same thing. अगर दुनिया वैसी होती जैसे हम जैसे दिख रही है, तो फिर हम वैसे रिएक्ट नहीं करते ना। दुनिया हमें वैसे दिख रही है जैसे हम हैं। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। सो इफ एनी प्लेस यू हैव टू डाइव, आज मैं मेडिटेशन में ही बात कर रहा था, अगर कोई जगह है जहां आपने कूद मारनी है, जंप मारना है, डाइव करना है, तो ये है, गो एंड डाइव इन योर ओन सेल्फ। अगर कोई जगह है जहां खोना चाहिए हमें, तो ये वो जगह जहां हमें खोना चाहिए। हम कहाँ बाहर की दुनिया में खोए हुए हैं, और वहीं खो के जिंदगी निकाल के निपट जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां आप खोना बंद कर दो पूरा। अब जस्ट सेइंग, कभी कभार वहां से निकल के यहाँ तो खो, और एक बार यहाँ खोने की सुध आ गई ना, तो इसका जो आनंद मिलेगा, वो आपको सोचने में मजबूर करेगा कि why the hell I did not think about it, why the hell I did not dive into it before. It is such a beautiful thing. So don't miss on the meditation side. So every Saturday we start. तो मैं कहता हूँ इसी बहाने जितने लोग आते हैं, आप सब जितने hundreds of you who join me every Saturday,
कम से कम इसी बहाने आप जो है मेडिटेशन कर लो मेरे साथ. बट इट इज नॉट ओनली सैटरडे मेडिटेशन, इट्स ऑन अ डेली बेसिस. So we start on a few success stories. But before we start on a few success stories, हाँ जी, आप लोग कैसे हो? How are you all this very morning? हाँ जी, let me hear the word from all of you. How are you all this very morning? Hmm, so it's great. कैसे हो आप लोग आज की सुबह? Happy? Hmm, awesome, great, fantastic, amazing, बहुत बढ़िया, खनखनित, मस्त, lovely, energetic, टकाटक. हाँ, great. There's a reel which has, I from one of my talks where I spoke about this fact that don't leave your home if you're not feeling great about it. Don't leave your home if you're not feeling awesome. Don't leave your home if you're not feeling, fabulous about yourself, because you will go and meet n number of people outside in the world. और आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छा feel नहीं कर रहे हो. You will pass on that not so good feeling to others. Or you might do things which may not get the best of results. So take some time out, go out of on a great mood, right? Even if your mood is not okay, ensure that you do something to get your mood okay. Everything starts from there. एकदम मस्त सम्राट वाली फीलिंग आ रही है. uh, we had an awesome time in the vision session. I may let's see if I can share something about it. But let's go to the success stories. I have a few success stories to share today. Success stories and sharings and a combination of that. So one is from Ashish Dudh. He had messaged me, called on me last week and a week before that. Unfortunately, I could not make it for his office inauguration. So he has made a great office, and he says we had a great opening of our new office. It has been a dream come true to have a premium level office space, and for which you would be proud. When I was speaking to him, and he said, "Sir, we wanted you to be there for the we wanted to invite you, but unfortunately you were traveling, so we could not." His wife Shweta says, "Sir, we missed you. Our achievements are incomplete without you. Eagerly waiting for you and Bhabhi to be there. And it's something new and first in my life, which I'm doing. And without your blessings, I'm incomplete. So love you for making us feel so loved and so wanted. But unfortunate होता है कि एक ही जान है और इधर उधर सब लोग खींचते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं. तो कहीं जा पाता हूँ कहीं नहीं जा पाता हूँ. And do I make the best of my efforts to जहाँ जा सकता हूँ मैं वह जाता हूँ. But then I wish there was a cloning of mine possible where I could go. But you thinking of me, you thinking that I should be there to be a part of your happiness. I'm so honored by that very thought. So all the best, Ashish and Shweta. Make sure uh, this new office has the vibes of a new you, right? And I'm sure it'll bring in it'll settle all, it'll achieve all the objectives which you have thought of. So wish you the very best. Another success story is it's not a success, it's a lovely sharing. And this is from Shalini Vyas, and she says, "Sir, my friend introduced me to Happy Minds, though I have not been regular due to my travel and tight schedules, but I make the best efforts to catch up on YouTube. Sir, last few Happy Minds have been very impactful. It's like each one is building on the earlier one. We had a proposal to present in our office for a value of 1.25 crores last week. I was really nervous as this was the biggest presentation ever in my life. But all the HMs and the last one, where you said that be a tea bag, dissolve self, tabhi to rang, tabhi to khushbu, tabhi to taste aayega." And I said in my mind, yes. And I said it in my mind, tea bag Gurudev ki jai. And I entered the room and gave my best, and we backed the order. Thank you so much, sir. आप नहीं जानते कि आप क्या कर जाते हो. Shalini. Arey wah. So nice. And when I read this and I had a glow on my face, I think the same glow is here right now as I share this lovely sharing. Okay, you know, you see, everybody has to do their own work. कोई किसी के behalf में कोई कुछ काम नहीं कर सकता. No matter how much I speak, no matter how much somebody else speaks,
फैक्ट ऑफ लाइफ इज कि आपने अपना काम तो आपने आपने खुद ही करना है ना, एंड नोबडी कैन डू दैट जॉब ऑन योर बिहाफ। तो आपने अपना बिजनेस करना है, आपने अपना जॉब करना है, आपने अपने रिश्ते संभालने हैं, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपने अपनी अर्निंग्स करनी है। तो कोई आपके बिहाफ पे नहीं कर सकता, कोई आपके बिहाफ पे जी नहीं सकता। तो आपने अपना जीना करना है। एंड द अदर साइड इज ऑल्सो ट्रू, आप ही ने अपना मरना करना है। सो नोबडी कैन डाई ऑल्सो ऑन योर बिहाफ कि यार डेलीगेट करता हूं, तू मर जा, आई विल कंटिन्यू लिविंग हियर। नो, यू, नोबडी कैन डाई ऑन अवर बिहाफ एंड nobody can live on our behalf. So we got to do our own living and we got to do our own dying. The only thing is, in this living of ours, जो हमने करना है, can there be some inputs which can make our living better? That's the only thing. Are we open to picking up a few things जिसकी वजह से हमारा जो ये जीना है इसका थोड़ा लेवल अच्छा हो जाए, तो हम अच्छा जी के निकल जाए यहाँ से। And that's what I've been doing, and that's what in a small way I give my best efforts कि थोड़ा अच्छा हो जाए। तो वो शालिनी का जो मैसेज है दैट आप क्या कर जाते हो आपको नहीं मालूम, आई डोंट नो, एंड बट आई जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एंड आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड दैट समवेयर दिस पुश। प्रेजेंटेशन तो आपने देना था, प्रेजेंटेशन के प्रिपरेशन भी आपने करनी थी, बट वो होता है एक एक फियर होता है, एक डर होता है, एक एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, एंड देयर समबडी सेज टू यू, गो डिसॉल्व, गो डिसॉल्व, नाउ नथिंग टू वरी। अब वो पानी गर्म है, आप जाके बस अभी डुबकी मार and just dissolve. Don't hold anything back. And I think that's what she did in that hall when she gave the presentation. That's what she must have done. कि अभी कुछ अभी क्या सोचना है, अभी क्या किस बात की डर, अब तो जाके सिर्फ निछावर करना है अपने आप को। एंड आई थिंक दिस आई शेयर्ड लास्ट हैप्पी माइंड्स आल्सो कि ये जो लाइफ है हमारी, ये वो गर्म पानी का मग है या कप है, एंड हम सब टी बैग्स हैं। एंड हमारी लाइफ उतनी है कि इस गर्म पानी में हमने डुबकी मारनी है। एंड देयर आर सम पीपल, जैसी वो लाइफ की गर्म पानी में डुबकी मारते हैं, लाइक अ टी बैग, दे जस्ट सरेंडर। वो अपने अपना कतरा कतरा जो है डिसॉल्व कर देते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है, इस लाइफ में उनका फ्लेवर आता है, इस लाइफ में उनकी खुशबू आती है, इस लाइफ में उनका टेस्ट आता है, और जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाती है। एंड येट देयर आर सम पीपल जो अपने एंजाइटी में, अपने डर में, अपने संकोच में, इनहिबिशंस में, व्हाट एवर रीजंस, दे डोंट डिसॉल्व देमसेल्व्स फुली। रुकते हैं, हिचकिचाते हैं, मैं दूं कि नहीं दूं, मुझे क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित, अपने आप को पूरा झोंकने में वो कहीं चूक जाते हैं। इमेजिन करो कि वो टी बैग गया अंदर और उसने, कभी कभी होती ना, व्हेन यू गेट सम चाय पत्ती विच इज नॉट सो गुड, ढीठ चाय पत्ती बोलता हूँ उसको मैं, ढीठ होती है, उसको डिप करो डिप करो डिप करो, अरे रंग ही नहीं छोड़ती। वो या तो अलग फ्लेवर होता है या फिर वो नकली चाय पत्ती होती है। आप करते रहते हो गर्म पानी ना, वो रंग ही नहीं छोड़ती है, फ्लेवर भी नहीं छोड़ती है, ढीठ होती है, स्टबर्न होती है। तो वैसे ही कुछ लोग होते हैं, कभी देखो आप काम में होते हैं, कभी बिजनेस में होते हैं, कभी यू हैव, कभी हम भी वैसे ही होते हैं, ढीठ हो जाते हैं, हम छोड़ते नहीं है रंग अपना। एंड मैं आपसे ये कहना है कि, एंड दैट्स व्हाट शी सेज, दैट शी वेंट इनटू द हॉल एंड शी सेज, जय टी बैग गुरुदेव, एंड शी जस्ट jumped into it, she just surrendered herself, and I'm happy that she got the contract. So all of us, it's okay, whichever situation you are in, that situation happens to be a situation of a hot water, just surrender. घर में गए ना, वैसी गर्म है, जस्ट जम मारो, निछावर कर दो अपने आप को। ऑफिस गए, वो 8 घंटा 10 घंटा जो भी आप काम कर रहे हो, इट्स दैट हॉट कप ऑफ वाटर, go and dissolve yourself. When I come for happy minds, this is my hot cup of water. I don't hold anything back. I just come and surrender. I just come and dissolve. Whatever it is, whatever I have at that moment, it is all for HMs. Then everything else stops for me. Everything else doesn't matter for me. It is this moment. It is this time which I have that matters. And in this time, I will not hold anything back. I will give everything of mine.
everything of mind, and that's what makes all the difference. तो पूछो अपने आप से आप कि आप अगर जो आप कामयाबी चाहते हो, जो आप अचीवमेंट चाहते हो, वो नहीं हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ही झोंकने में, हमारे ही समर्पण में, हमारे ही डूबने में, हमारे ही अपने आप को देने में कहीं हम ही तो नहीं चूक रहे हैं. एंड मेनी टाइम्स इट इज द केस वेयर वी हैव नॉट गिवन आवर 100% टू इट. मैं तो 100% छोड़ो, गिव योर 100% एंड लिटिल मोर, दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. हाँ जी, यू देयर विद मी. जी, आज जनता किधर है? हम्म. तो मैं जिस भाव से मैं कह रहा हूँ कि आई एम कंडक्टिंग हैप्पी माइंड्स, आप भी अपने आप को समर्पित करके सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यस सर, आई ऑलवेज गिव 100%. मुझे याद आ रहा है स्कूल में ना, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो वी हैड आवर आर्ट स्पोर्ट्स टीचर. ग्रेट, 100% विद यू. वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. ग्रेट. मैं आपसे इसलिए टाइप कराते रहता हूँ बीच में, सुधर आप जागे रहो, जागृत रहो, मेरे साथ इन्वॉल्व रहो. So it doesn't become a one way, and you can also raise your hand if you want to share something. You can also raise your hand, and we'll see that we can have some sharing happening from your side. You know, sir, what if it is against our wish? मुझे समझा नहीं आपका क्वेश्चन. Can you be a bit more elaborate, Shilpa? Can you just send me a more elaborative? What if? What is that if? What if it is? वो sorry, what is that it? It क्या है? क्या चीज है जो आपके अगेंस्ट है? अगर कोई काम ऐसा है जो आपके अगेंस्ट है, ऐसा कुछ पूछ रहे, मुझे मालूम नहीं. आप मतलब क्वेश्चन मुझे आप उनका लिखोगे दोबारा, आई वुड गेट सम मोर क्लैरिटी इन इट. बाय टाइम यू टाइप इन, लेट मी शेयर समथिंग. आप टाइप करके मुझे दो. आई रिमेंबर इन स्कूल वी हैड आवर स्पोर्ट्स टीचर, एंड बड़े टफ थे. तो मिस्टर मिस्टर लाल, मिस्टर पटिकलाल उनका नाम था, ऐसा समथिंग लाइक दैट. एंड मतलब उनको, उनके सामने सबकी बैंड बजी रहती थी. सो आई रिमेंबर we were practicing for a shot put somewhere in 1987-88 की बात. तो शॉट पुट का हमारा स्पोर्ट्स डे में था, तो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम फॉर द शॉट पुट वन. तो मैं अपने हाउस की तरफ से आई वाज पिक्ड अप टू टेक पार्ट इन द शॉट पुट. तो शॉट पुट, वो जो हाथ गोला जो फेंकते हैं, दैट इज शॉट. उसका एक तरीका होता है फेंकने का, उसका एक यू कांट क्रॉस द सर्कल, उसके बाहर पैर जाना नहीं चाहिए, एंड थिंग्स लाइक. तो मैं इनके पास गया, और उनके पास ही होता था वो दैट बॉल, दैट आयरन बॉल, उनके स्टोर में रहता था. तो वो प्रैक्टिस करने के लिए, इट्स 15 days फ्रॉम नाउ द कंपटीशन इज देयर. एंड उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भाई यू हैव टू हैव सम प्रैक्टिस. अब प्रैक्टिस क्या करो, क्योंकि वो बॉल जो है वो उनके पास है, वो स्टोर में रहती है. तो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई आप हमें बॉल दे दीजिए. तो दो या तीन बॉल्स होती थी, एंड देन यू टॉकिंग अबाउट द एंटायर स्कूल देयर. और जैसी बॉल मिलती थी, लोग झपट के ले आते थे उसको. सो और कभी कभी तो उनको ढूंढो पहले, वो है किधर सर. और यू हैव जस्ट दैट हाफ एन आवर स्पोर्ट्स टाइम पीरियड वेयर यू कैन गेट दैट टाइम टू प्रैक्टिस. तो दो तीन बार ऐसा हुआ कि मेरा ना, वो कभी वो नहीं मिले, कभी वो मिले तो बॉल नहीं मिली. तो फिर मैंने उनसे ऐसी रिक्वेस्ट किया ऑफ उसमें कि सर वो कैसे हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन में, हमें तो प्रैक्टिस का ही समय नहीं मिल रहा है और वो बॉल भी नहीं मिल रही है. तो वो उन्होंने, मैं उनको इतना गुस्सा आया कि मैंने उनसे पूछ कैसे लिया, मैंने उनसे कह कैसे दिया वो. और उस समय जो है ना, फिजिकल बातें होती थी, मतलब ऐसे शब्दों से बात नहीं होती थी. तो उन्होंने मुझे ऐसा धक्का दिया कि अभी मैं तेरा गुलाम हूं मैं, am I your slave? Go and practice anywhere you want to practice. नहीं मिलेगा तेरे को बॉल. एंड वो
मुझे समझ नहीं आया कि व्हाट इट बट उनका वो झाड़ना, उनका वो डांटना, आई थिंक वाज वेरी, वो अलग तरीके से काम किया। एंड सिंस आवर स्कूल वाज ऑन टॉप ऑफ अ हिल, इट्स द हाईएस्ट स्कूल इन एशिया एल्टीट्यूड वाइज, वहां पहाड़ों में वो इट्स एंटायर हिल एरिया। तो मैं ऐसा रिजेक्ट रिजेक्ट गया, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, मैंने क्या गलत पूछा, उन्होंने मुझे डांट दिया। तो मैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तो सडनली आई आई सेड अच्छा ठीक है, बॉल नहीं दे रहे तो कम, लेट मी प्रैक्टिस। तो मैंने पत्थर उठाया, और एक भारी भरकम पत्थर, एंड आई हैड नो आइडिया उसका वेट क्या है, एंड आई स्टार्टेड यू प्रैक्टिसिंग विद दैट स्टोन। वो मैंने पत्थर को अपना अगले 10 दिन के लिए पत्थर को अपने साथ कर लिया। तो मैं उसको प्रैक्टिस करता था, उस पत्थर को उठा के मैं साइड में रखता था। पत्थर को कौन चोरी करके ले जाएगा, नोबडी नोज व्हाट दैट स्टोन इज, बट फॉर मी दैट बिकेम द आयरन बॉल। For me, that thing became my way of practicing. So every day I would come और मैं उस पत्थर को उठाता था, and I would just practice. तो रोड में चलते चलते I would practice, I would and ऐसा 50 बार फेंकना, 60 बार फेंकना, जब तक मेरा पूरा शोल्डर दुख ना जाए। And I had no idea what weight that stone। और फिर एक दिन आया जब कंपटीशन का आया, एंड मेरा विश्वास करो, when I went for the competition there, and हाउस की तरफ से I was there, जब मैंने एक्चुअल बॉल उठाया, इट वाज सो लाइट, बिकॉज अनजाने में मैं भारी पत्थर से प्रैक्टिस कर रहा था, एंड इट वाज सो लाइट। मैं कहा ये, एंड आई थ्रू द बॉल, एंड आई टुक द मेडल ऑन दैट डे। तो व्हेन यू गिव योर नॉट 100%, व्हेन यू गिव 100% एंड अ लिटिल मोर, सो मेरे लिए वो पत्थर वाज अ लिटिल मोर, इट आई डोंट नो, आई डिडंट नो द वेट ऑफ दैट स्टोन। तो वो मेरा ज्यादा करना केम टू माय बेनिफिट, और उनका वो मेरे पीटी टीचर का मुझे झाड़ना, मुझे डांटना, जाने अनजाने में I took it in a positive way. Otherwise, you could have just given up, and you could have said, "भाई ठीक है, नहीं करते यार." So I'm just saying that जब तक आप निछावर नहीं करोगे ना खुद को, तब तक यार मिलेगा नहीं कुछ। So क्या लिखा है शिल्पा? Situation which we are forced into our not on our wish, into not our wish, a function or some meeting where past experience was not good. तो क्या, अच्छा तो क्वेश्चन है सर, आप कह रहे हो कि अपने आप को निछावर कर दो ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। I'm assuming कि it is from what I'm sharing। तो she says आप बोल रहे हो खुद को जो भी सिचुएशन है वो एक गर्म पानी है, उसमें अपने आप को आप डाल दो, डिजोल्व कर दो। बट व्हाट अगर हमारे विश, हमारी इच्छा ही नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है वो इवेंट में। तो उन्होंने कहा कि सपोज एक इवेंट में जाना है, एंड कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, वहां जाना है, और हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन है ना नहीं जाने का, आपके पास ऑप्शन है ना नहीं जाने का। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, वो ना हम मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो देखो फैमिली इवेंट है, और वहां तो देखो जाना ही पड़ता है इज्जत के लिए, और बड़े बुजुर्ग भी होते हैं तो फिर वो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमारी इच्छा हम नहीं जाएंगे, उनकी घर में शादी है तो जाना पड़ेगा, उनके घर में शादी है। लेकिन पिछली बार जब हम गए थे तो दे डिडंट गिव अस दैट रिस्पेक्ट। तो व्हाट डू वी डू? अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक नहीं जाना, तो वो आपने कहा वो तो हम नहीं करेंगे, हम जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है, हम जा रहे हैं और शादी में फूफा जी की माफी मुंह फुला के जाएंगे। तो हम जाएंगे भी और नहीं भी जाएंगे वाली बात हो जाए। इनफैक्ट हम नहीं जाने से ज्यादा बुरा हम कर देंगे, दैट वी आर देयर बट वी आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ फ्लेवर्स एंड बेस्ट ऑफ मूड, वी आर फ्रॉम एवरी एक्शन ऑफ आवर्स, ऐसा लगेगा ये एक कंपल्शन की दुकान आई हुई है, एक बोलते ना कि मजबूरी की दुकान है, ये मजबूरी में इंसान आया हुआ। तो ये दिखा के, ये बता के, ये जता के किसको फर्क पड़ने वाला? कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। आप वहां गए और आप मजबूरी में गए हो, और आप पूरा ऐसा आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर है कि आप मजबूरी में आए हो, तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आपके वो एक दिन, 2 दिन, जितने दिन आप उस फंक्शन में हो, वो 3 दिन बेकार हो जाए। तो व्हाट यू डू, आई एम जस्ट सेइंग यू आर देयर ना, नाउ डिसॉल्व योरसेल्फ। या तो नहीं जाते, अब हो तो डिसॉल्व करो, तो डिसॉल्व किस में करो, कुछ तो काम पकड़ लो, कुछ देख लो जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। सो इट्स ओके, योर पास्ट एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड, बट नाउ यू आर ऑलरेडी देयर ना। जैसे ऑफिस की पिकनिक है, पास्ट पिकनिक में मजा नहीं आया, दे वी डिडंट हैव अ ग्रेट टाइम, तो अभी आप आज के पिकनिक में जा रहे हो ना। ना डिसॉल्व योरसेल्फ, व्हाई यू होल्डिंग ऑन टू योर पास्ट एक्सपीरियंस,
टू किल द प्रेजेंट एक्सपीरियंस। और अगर पास्ट एक्सपीरियंस इतना दुखदाई है, इतना प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर नहीं जाएंगे। एंड वो भी ऑप्शन मेरे पास है। मुझे लग मेरा कहना यह है कि जब जा रहे हो तो आप उस गर्म पानी में जा रहे हो ना, तो अभी होल्ड करके क्या मतलब, कर दो। या मेरा कहना आसान है, करना मुश्किल है, तो फिर किसने कहा अच्छी जिंदगी जीना आसान होती है? किसने कहा गर्म पानी में जाना आसान होता है? वो तो मुश्किल ही होता है। और जाना सबने अपना अपना है। आई विश आई कुड गो ऑन योर बिहाफ, कि आपके बिहाफ में मैं उस शादी में चले जाऊं, बोलो मैं आ गया हूं। लेकिन मेरा जाने से कुछ नहीं होगा ना, जाना तो आपको ही पड़ेगा। सो दैट्स हाउ इट इज। सो डोंट वरी अबाउट जंपिंग इनटू द हॉट वाटर। और कभी भी जब हमने अपना अच्छा दिया है ना, हमारा कभी बुरा नहीं हुआ है ना? मजे की बात, जब कभी भी हमने अपना अच्छा दिया है ना, हमारा बुरा नहीं हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें शायद वो नहीं मिला जो हम चाहते थे, कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने उस इवेंट में, उस शादी में, उस फंक्शन में हमने सब अच्छा किया, हमने डांस भी किया, हमने हेल्प भी कराई, हमने सब कुछ करा, और किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो शायद हमें अप्रिसिएशन चाहिए था, शायद हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए था, शायद हम चाहते थे कि कोई तो बोले यार तुमने अच्छा किया, और वो हमें नहीं मिला। लेकिन हमारा, अगर अपने आप को समर्पित हमने किया, अगर हमने अच्छा किया है ना, हमारा कभी बुरा नहीं। हाँ, शायद हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारा बुरा तो कभी नहीं। जस्ट रिमेंबर दिस, जस्ट होल्ड ऑन टू दिस थॉट माइंड। और जब हमारा बुरा कभी नहीं होता, तो उस काम में फिर क्या बुराई है, करो ना। Sir, how do we increase realization more? As you say, just knowing doesn't enough for success. How do we increase our realization? अरे, आज क्या बात तेज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। How do we increase our realization? हाँ, this is last time question है जो रह गया था। Yes. How do we increase realization? Realization will happen, or how do you increase it? One of the best ways, not the only way, one of the best ways for realization to happen. तो पहले समझो कि realization जो है वो वो क्या है? Realization is you recognizing at that moment what matters at that moment. और हम वो रियलाइजेशन कब करते हैं? जब हम थोड़ा ठहराव लाते हैं। हम जब फ्लो में होते हैं ना, तो रियलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि हम उस फ्लो में, उस काम में अटके होते हैं, तो सुध नहीं होती। सो फॉर रियलाइजेशन टू हैपन, it's important that we pause and we ask certain important questions. So we pause. तो बड़ा जरूरी है कि हम पॉज लें अपने काम में। तो इसलिए मेडिटेशन टाइम इज अ वेरी गुड टाइम। इट्स अ वेरी गुड टाइम to realize a lot of things, because before you go into meditation and after you come out of meditation, एक स्लो डाउन का टाइम होता है। मेडिटेशन में क्या होता है वो you don't know, but before you go into meditation and after meditation, your kind of life slows down. You disconnect from the outside world, you disconnect from the activities, you take a pause, और उस पॉज में आपको एक रियलाइजेशन होने की संभावना क्रिएट होती है। और अगर आपने उसमें कॉन्शियसली कुछ डाल दिया, बड़े अच्छे रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे आज मेडिटेशन के लिए, तो बिफोर दैट यू आस्क योरसेल्फ, यू पुट अ थॉट इन योर माइंड, यू पॉज नाउ। अभी आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप पॉज में आ गए। उस पॉज मोड में आपने एक विचार डाला कि हाउ इज माई व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन इन माई होम। मेरे घर में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन किया, आपने ये विचार डाल दिया। एंड इन दैट पॉज मोड, दिस क्वेश्चन विल मेक यू रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स। आपने एक पॉज मोड में एक क्वेश्चन डाल दिया कि व्हाट अबाउट माय पेरेंट्स, एम आई गिविंग सम टाइम टू देम? एंड दिस क्वेश्चन इन दैट पॉज मोड विल मेक यू रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स। पॉज मोड में आप गए, आप बैठे, एम आई टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ? एंड सडनली यू हैव लॉट ऑफ रियलाइजेशन, आपको एहसास होना चालू हो जाए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कि फैक्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ता। द फैक्ट इज दैट यू मे नॉट बी गिविंग इनफ टाइम एट होम, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। बट जब आप वो पॉज लेते हो और आप पूछते हो अपने आप को, एम आई गिविंग इनफ टाइम एट होम, दैट मोमेंट द रियलाइजेशन जो आपको होता है, दैट मोमेंट व्हेन यू हैव दैट रियलाइजेशन,
That is the point of transformation. So facts on their own, they will not give us anything. Fact to fact है, मरे हुए हैं, निर्जीव है facts. It is only when we realize, then those facts start speaking to us. हाँ यार, time नहीं दे रहा हूँ. The fact that time nahi de raha hu now has become alive. And that's what has to be done. So in the same way in business, in your professional life, take a pause. कि मेरा भागम भागी जो है, what is this all about? ये last year का turnover बढ़ गया 30-40% से, what does it mean? Has my life become better by 30%? Or is it just the money which has come in, which is 30% more? Is my quality of life, has it become better? So take a pause. So आप जब happy minds में आते हो ना, so it's a pause. So meditation is a pause. You listening to me in happy minds is a pause. You reading a book is a pause. Right? So जहां आप अपने रोज के काम से पॉज लेते हो, वहां पर रियलाइजेशन की एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है. ये आया पकड़ में. Is it all of you? This was not for Tej. This was for everybody. That somewhere the realizations are not very strong. They are very very weak realizations. Hello? Anybody realized anything? So don't worry about the facts. Focus on how much you are realizing about something about the facts. The fact is that life में ये समय ऐसे ऐसे भाग रहा है. I mean, in the morning, I was sharing with Rachna ma'am. Those of you don't know Rachna, she's my wife. I was sharing with her. अरे अभी तो एचएम मैंने दिल्ली से लास्ट एचएम, it seems like मैं अभी दिल्ली से मैंने एचएम लिया, मैं कहीं कर एचएम और आ गया, मतलब 1 more week gone. 168 घंटे और निकल गए, 7 दिन निकल गए, साल के 52 हफ्तों में से एक हफ्ता निकल गया. टाइम इज फ्लाइंग सो फास्ट. ये फैक्ट है. बट उसका रियलाइजेशन करना हो. सो व्हेन वी it is just taking a pause. In that pause, you realize that 1 week gone. I mean, there was a birthday of one of my friends, and I was talking to him, and I said, "Yeah," and he told me, "Yo, ये ना 50 के बाद ऐसा लग रहा है लाइफ भागे जा रही है, स्पीड बढ़ गई है हमारे भागने, हमारे हमारे एक एक साल के आगे बढ़ने की स्पीड तो वही है, बट समवेयर the way life is, you're missing out. You're just it is zooming past. और realization हो रहा है कि we're inching closer, closer, closer. Not that time has the speed of time has increased. यही टाइम तो जब हम 30 के थे तब भी था, ये जब जब 20 के थे तब भी यही टाइम था, स्पीड वही थी. But what has happened in now and the difference between now and the 20s and 30s, in 20s and 30s we would never think, we would never pause and say यार time बहुत जल्दी जा रहा है. We would be so much into life, we would be so much into the thrill of life, the joy of life, कि हमें हिट ही नहीं होता था. But now when the moment you touch 40s and you come into late 40s, somewhere this starts dawning on you कि यार ये हाफ सेंचुरी के पार आ गए. And then suddenly टाइम की एक मीनिंग, एक रियलाइजेशन अलग हो जाती है. So that's how it is. Good that you are asking these questions. You can ask me a few more questions if you have in mind. By the time I'll read one more sharing. This is from Nikita Mantri, and she says, "So happy to share that my daughter Namrata, her new movie Do or Do Pyar with Vidya Balan got released on 19th of April." I go, wow, this is fantastic. Congratulations. At a young age of 16, she was keen to work in cinema, and she went to one of the shoots, stood there whole day requesting everyone in crew to help her to get into the crew. And she showed her readiness to be a spot boy too. And the director let her in. Starting from there, she completed her design course and went back to her passion. And she has done multiple roles behind the camera, gradually moving ahead without losing her aim. And finally began assisting
to lead graphic designer for big banners in 10 plus movies. And she says would like to share how her life and thought process got shaped. She was always a passionate and hardworking girl, and after doing a summer workshop of zooming ahead at the age of 14 by uh, Rachna ji, and she did your course at the Life 360 course when she was 22. Those were the major turning points of her life, and she got recognized at the annual program of Chrysalis. Yes, I remember when I called her on stage. All this has helped her a lot in her personal professional world, and I'm happy to share that at the age of 26, she's a director in one of the reputed designing companies. So thank you, sir, for the impactful programs you have been conducting and shaping the life of and career of many. So congratulations, Nikita, and also to Namrata. Wonderful that things are happening and things are going your way. And I feel that एक right समय पे ना कुछ अगर एक shaping हो जाती है, एक right age पे अगर there's some things which are given to the child, so you don't know how far the potential would be, or how far that would impact the child's life. And there's so many stories which I keep on getting of youngsters. In fact, I met a friend, and I was saying that 25 years in this industry. So a lot of youngsters who were there with me in 2001 or 2, uh, those youngsters are now grown up adults. They have the children who are now who are teens and who are in college. So they're sending their children back to me, and it's a complete cycle by itself. And in fact, I met Vaishali. She's a part of our Rasamasti batch, and she was in the vision session. So she told me the second day, she said 2007 when I was in my hostel, and she says I'm from a small town called Kopargaon, और मैं हॉस्टल में थी पुणे में 2007 या 6 या 7 की बात होगी. And all my hostel mates, all the girls who were there in the hostel with me, they were kind of they had done your program. एंड हॉस्टल में आके एमजी सर करती रहती थी, तो मैं आपके प्रोग्राम में आई थी. एंड आई वाज सो ओवरवेल्म्ड बाय द प्रोग्राम एंड आई रियली वांटेड टू डू. लेकिन छोटे शहर से होते हैं, कोपरगांव से थी मैं, तो ऐसा लगा कि शायद मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और वो रह गया थॉट प्रोसेस. बट मन में था काश मैं कर पाती. एंड शी सेज वो मेरे मन में था बट वो नहीं हुआ फॉर वॉट एवर रीजंस. एंड शी सेज वो 2007 की बात है. And now we're talking about almost around 14 years, 15 years उस बात को. And she says, today I'm here, I'm doing one of your biggest programs on business. And तो कभी भी कोई चीज को दिल, तो मैं, she says कि वो पिछले 15-16 साल में भूल गई कि मुझे कुछ प्रोग्राम करना आपके साथ. And it is now that I'm with you, I realize कि मेरी शायद मन में बहुत strong वो wish रही होगी, desire रही होगी. And that's why I'm here. So it's a wonderful. So ये जो story है निकिता की, and about her daughter Namrata. I'm just saying that all of you who have children at home, it's so important that you kind of you're responsible for shaping your child's life. And that responsibility does not mean that आप ही ने shape करनी है, लेकिन आपने shape करवाने की जिम्मेदारी लेनी है. And आपके ऊपर नहीं छोड़ा भगवान ने कि आपने shape करनी है. और आप तो वैसे भी shape, बहुत से लोग तो shape करने लायक ही नहीं है. But you are taking responsibility of the child. कि भाई उसको 2+2 आना चाहिए ना, उसको ABCD आना चाहिए, उसको क हिंदी में लिखना आना चाहिए. तो ये जिम्मेदारी आपने ली है. इसका मतलब ये नहीं कि आप सिखाने बैठोगे उसको. तो आप क्या करते हो, आपने उसकी जिम्मेदारी ली, तो आप क्या करते हो, उसको स्कूल भेजते हो. चल जाके तू मैथमेटिक्स सीख गया, तू हिंदी सीख गया, तू संस्कृत सीख गया, तू अंग्रेजी सीख गया. आपने सिखाते बैठते हो ना. यू आर वेरी मच अवेयर कि मैं, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मेरी है. इन द सेम वे, your child, as he or she is growing up, it's important that you shape and shaping मतलब you send the child somewhere if you can't shape it yourself. पहले तो अपने घर का माहौल इतना बढ़िया होना चाहिए. दूसरा, जहाँ शेप हो सकते हैं बच्चे वहां भेजने चाहिए. इनफैक्ट अभी हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है अलाइव का. विदिशा, she's going to take that batch of youngsters, age group of 10 to 14 years of age. So a lot of youngsters are going to be a part of the program. It's a 1 week or 8 days kind of a program. और आपके बच्चे हैं, अगर आपको भेजना है उनको. And that's what Nikita said, that when she was 14 years of age, तो उस age में she did the program.
ये देखो मेरी टीम में डाला शायद, हाँ इसी में. So it is there on इधर गया वो इधर, हाँ अरे आगे पर, हाँ ये पीछे वाला है. So this is on 20 from 20th to 26th of May, right? It's from 10 a.m. to 1 p.m. It's going to be in Pune in Chrysalis, and Vidisha, she will be conducting that program. So if you feel that your children should benefit, if they fall in the same age group, कि 10 से 15 साल की एज ग्रुप में वो है, तो आप अपने बच्चों को भेजो उसमें, and they will become fans of Vidisha. That's for sure. That's for sure. वो आप कर सकते हो. So coming back to what I was saying. अच्छा इसमें एक चीज और है बेटा, उसमें लेके जाओ. I'll just share, then we'll finish this. There's all Chrysalians, or those of you who have been a part of any of my business programs, you are invited for Leap, and this is our business initiative. हमारा all the entrepreneurs who have done the program, they're invited for this program called Leap. Leap is an initiative where we lead entrepreneurs towards abundance and prosperity. तो इस बार का हमारे स्पीकर्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं. सो वी हैव Indranil Chitle who's coming to address. Then we have Pritam Shah of Parag Dairy is coming and addressing. We have Rajesh Mandlek, our very own. He will speak on succession planning. And we have Mr. Kulkarni coming from Mumbai to address us. He's an Everester. He's a double Everester. दो बार Everest ने climb किया. He's got a beautiful story to share with us. And Indranil is the third generation of the Chitle Bandhu. He is kind of transformed Chitle Bandhu to what it is right now. पहले वो जो था ना 1 से 4 बंद, हम कोई शाखा नहीं उसके, जो technology wise he's brought in a lot of changes in Chitle Bandhu in Pune. So he's going to be there. And of course there's also one more speaker called Manish Gupta there. So that's there. And the third thing which I want to share with you is the My Life initiative, My Life program for August. It's there. And those of you who want to be a part of the My Life, you can apply. So only one batch, just a limited number of people in this. If you really want to have a spiritual awakening from inside, and you want to have some awesome time with yourself, if you want to be on a date with yourself, then be a part of My Life. And you can also get in touch with my team. And this is based on some interviews. We'll conduct some interviews, and if you're selected, then we will take you for My Life. That's how this program kickstarts. Chaliye, come back. So what I was saying is we are responsible for shaping our children's life, and वो जिम्मेदारी हमारी है. अब वो कौन शेप करता है, actual shaping कौन करता है? So maybe some tennis coach will shape the tennis side of the child. Some cricket coach will shape the cricket side of the child's life. Some gym trainer will shape the physical fitness side of a child. But वो जिम्मेदारी हमारी है कि वो वहां जाए. सब चीज हम नहीं सिखा सकते, बट ओवरऑल जिम्मेदारी हमारी. जैसे बिजनेस है तो बिजनेस की 100% जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन सेल्स कोई और करता है, प्रोडक्शन कोई और करता है, परचेस कोई और करता है, पैकेजिंग और डिलीवरी कोई और करता है, बट जिम्मेदारी तो हमारी है ओवरऑल. तो हर चीज हम नहीं करते बैठते. तो बड़ा जरूरी है पेरेंट्स को ये समझना दैट देयर इज सो मच पोटेंशियल इन अ चाइल्ड एंड सो मच कैन हैपन. So any other question which you have? So you can put a question across if you have any questions you'd like to ask me, and then I will take it across if you have any question. I think I've shared my whatever success stories I had to share. तो आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे बताओ कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है. And especially the ones who joined us new for the first time, are you there with me? Have you been able to connect, and have you been able to get some insights from today's Happy Minds? We've been able to आज माहौल सुस्त क्यों दिख रहा है मुझे? क्या बोल रहा है? दूध में शक्कर जैसे घुल जाते हैं. हाँ. So मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि if you, okay, I have a question for all of you. The question for all of you is, in your current profession, in your current engagement, आप जो भी आप काम में engaged हो, it can be your job, it can be your business, it can be your studies. I don't know what engagement you have right now.
We all have our own aspirations in that. So what will make you achieve those aspirations of yours? आपका जो current engagement है, उस engagement में, उस काम में, उस activity में, what will make you achieve more? What will make you achieve more? चलो इस question का answer दो. But a simple question है, and answer is also very simple. There's no rocket science to this question. In your current engagement, what will make you reach out to your aspirations? Consistent efforts in the right direction. Taking action. ठीक है. I'm waiting for a few more. In your current engagement, whether you are a yoga teacher, whether you are running a business, whether you are a student, you are working in an organization, what is that thing which is going to give you more of can-do attitude? Okay. So by the time you all answer, love. ये कौन सी मोहब्बत चाहिए तुम्हें? इनर सेटिस्फैक्शन. ये दुनिया ढूंढ के मृणाल दीवानी होगी, उनको इनर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. वो कुंफू पांडा में ना that पांडा would said inner satisfaction. ठीक. Strong desire. Santosh was in my batch, and he joined the Samasti batch, and I was so happy for him to take that decision, because it is such a bold decision to start a business, to have an idea, and he's starting a business, and he says, before I start the business, let me learn about how to do business in a better way. It's a lot of people who are doing business and then they learn. He says, before I start, can I learn the business in a better way? So, and he says to me, sir, I am so happy to hug you. And so nice. Chalo. He says, updating more and more knowledge, being disciplined. Aisha kitab likhti ko jane. Habit of daily routine that matches to aspiration. Okay, बहुत बढ़िया. सबका प्यार. Oh, yeah, out of context answer आते नहीं. Planning and implementation. चलो ठीक है. Let me give you some clarity on it. ये किताब किसने लिखी इतनी बड़ी सी? Oh my God. संजय लाने ने पूरी किताब लिखी है. कैसे टाइप कर लेते हो भाई इतना सा? This legacy of great saints in Maharashtra, which says, okay. Chalo, thank you, Sanjay, for sharing. Keep your mind in happy state, which results in success in every good. ठीक है. Okay, chalo, let's have some kind of a clarity on this. देखो, to achieve more, simple fact is that you got to do more. So if you want to reach a destination which you have never reached before, simple understanding. If you want to reach a destination which you have never reached before, then you got to take paths which you have never taken before. है कि नहीं? If you want to achieve things which you have never achieved before, then you got to do things which you have never done before. If you got to accomplish things which you have never achieved or never accomplished before, then you got to do things. You got to be in that state which you have never been before. So madness or वो येड़ापन जो है वो किसको बोलते हैं? वो उसको बोलते हैं कि you doing the same thing but expecting different results. या कभी-कभी मैं करता हूँ ऐसा काम where I do the same thing and I expect better results. For example, I love eating parathas. मुझे बड़ा I cannot hold myself जब पराठे बनते हैं घर में तो मैं एकदम होल्ड नहीं कर पाता. तो मैं खाता पराठे हूँ and then I want my health, my tummy to be absolutely flat. तो वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है. And then somebody at home will tell, देखो
this is what you want to achieve and this is what you're doing. They are total in contrast with what you want. तो इसको येड़ापन बोलते हैं. So we at times we want some accomplishment, we want more in life, but our actions are not in sync. They're not complementing what we want. So हल्का सा एक आपको देता हूँ so that you can hold and chew on this for the entire week. That if you want more from life, then we can do a lot more than what we have been doing. This is one fact. लेकिन इसका मेजर क्या है पार्ट? Understand, there are two dimensions for us to grow. There are two dimensions which you have to keep in mind, which can make us on a path of continuous growth. The first dimension is our consciousness. First dimension is consciousness. Second dimension of growth is competence. जब तक हम कॉम्पिटेंट नहीं होंगे ना, तो फिर हमें ग्रोथ तो मिलेगी नहीं, हम कामयाब तो होंगे नहीं. So till we don't achieve a certain level of competency, you will not start getting results. That's one part. Second is our own awareness, हमारी खुद की जागरूकता कि हम कितने कॉम्पिटेंट हैं, कितने नहीं हैं, ये भी लगातार बढ़ती रहनी चाहिए. So when we talk about these two dimensions, अगर हम ऐसा एक ग्राफ ले लें, अगर आप देखो, the graph is there, where one side, if you talk about the x axis, we talk about an x and y axis का हम बात करें, तो एक एक्सिस पे आप ले लीजिए कॉन्शियसनेस, एक एक्सिस पे आप ले लीजिए कॉम्पिटेंस. तो आपका कॉन्शियसनेस भी बढ़ते रहना चाहिए और आपके कॉम्पिटेंस भी बढ़ते रहने चाहिए. चैलेंज क्या है कि वी आर इन मेनी एरियाज, वी आर अनकॉन्शियस, हम अनअवेयर हैं ऑफ एरियाज वेयर वी आर इनकॉम्पिटेंट. बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां पर हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम काबिल ही नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में जागरूकता नहीं है. वी आर नॉट अवेयर and we happen to be in a state called unconscious incompetence. इसको बोलते हैं भोला आदमी है, ये भोला है, इसको मालूम नहीं है और इसको मालूम भी नहीं है कि इसको मालूम नहीं. And when you are in a state of भोलापन, when you are in that state, there's a much more stronger word which is called बेवकूफ, तो मैं वो यूज नहीं कर रहा, but I'm just saying भोला, कि ये भोले लोग जो होते हैं ना, फिर इनका रिस्पॉन्स कैसा होता है? इनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सम न्यू इनिशिएटिव, इनका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स सम ग्रोथ इनिशिएटिव, इनका रिस्पॉन्स किसी किताब को लेके होता है, अरे नहीं, आई नो लॉट. द फैक्ट इज दैट दे आर नॉट इवन अवेयर, दैट दे डोंट नो, दे आर नॉट इवन अवेयर कि उनको वो काबिल नहीं है उस काम के लिए. और ऐसे भोले लोग जो है ये कांड कर देते हैं, बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, नंबर वन, एंड दे आर अनकॉन्शियस अबाउट द इनकॉम्पिटेंस. तो ये भोले लोग जो है कांड कर देते हैं. ये भोले लोग बोलते हैं, I have my own experience. Who will teach me? I got enough experience. They're not even aware. Right? So, husbands, when you go home, you are incompetent. You are incompetent to deal with the situation at home. And most of you are not even aware that you are incompetent. और क्या होता है, तुम इस इनकॉम्पिटेंस के साथ और उस अनअवेयरनेस के साथ घर में जाके भिड़ जाते हो, तो तुम्हारी पिटाई तो निश्चित ही है ना. So first level which you have to cross is that can you come out of this state. So in areas where we are incompetent, कोई गलत बात नहीं है, but areas where we are incompetent we become unaware or we are unaware, ये बहुत लफड़े वाली बात, ये दिक्कत वाली बात. ये भोले बने रहना ये अच्छी बात नहीं. So when you work on your consciousness, you kind of ask, जैसे तेज ने पूछा कि how do we realize? So take a pause and you kind of become conscious. So you move to the second level. The progression happens that you become conscious of your incompetence. तो आप घर जाते हो और रास्ते में आप कहते हो, ओ मेरी कहाँ काबिलियत उससे लड़ने की. तो मानसी says, Rohan says before he heads home, कहाँ मैं मानसी से उलझूंगा, मेरी काबिलियत ही नहीं है. He is conscious about his incompetence. तो या तो मैं काबिलियत बढ़ा लूं या फिर मैं हार मान लूं. So that's the second stage of progression, that you're conscious of your incompetence. And then a time comes. So
अब मुझे कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ना तुम लोगों को ये कनेक्ट करवाने के, अदरवाइज इट जस्ट गोज लाइक अ बाउंसर. सो देयर आर पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन जो गलत काम कर रहे हैं या जिनको काम नहीं आता, और उनको ये जागरूकता भी नहीं कि इनको काम नहीं आता, तो वो सीखेंगे भी नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इवन अवेयर, दे आर इन देयर ओन ट्रिप. सो दे आइदर दे अंडर और दे ओवर एस्टिमेट. तो वो जो उनको नहीं आता, राइट, उसको अंडर एस्टिमेट करते, वो पड़ी नहीं है उनको जो नहीं आता, क्योंकि जागरूक नहीं है. सो द मोमेंट दे बिकम अवेयर, सो एज इफ यूर अ लीडर, you what you got to do, you got to make them aware. The moment they are aware that they are incompetent, now something can be done, and that's what makes them move to this third level of this dimension, where we say you are consciously competent. तो फिर रोहन ने सीखा हाउ डू आई डील विद माय वाइफ. तो उसने सब कुछ किताबें पढ़ी, कुछ लोगों से बात करी, दोस्तों से बात करी, इधर कुछ कोर्स वोर्स किया, सीखा हाउ टू डील with your spouse and how to emerge victorious. तो उसने consciously competency का काम किया, उसने सीखा. जैसे बहुत से लोग हैं, they are not even aware that they can't speak in public, so they are unconscious of the incompetence. Then one day they are made to go on stage, they become conscious of their incompetence. कि वो जागरूक हो गए अपने अपनी नाकाबिलियत को लेके, फिर वो अपने पब्लिक स्पीकिंग पे काम करते हैं, दे बिकम कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट. सो वो अभी अपने पब्लिक स्पीकिंग पे काम कर रहे हैं, उनको मालूम है और काम करना है, तो वो काम भी कर रहे हैं, जागरूक भी हैं, कॉन्शियसली कॉम्पिटेंट. एंड देन एज यू कीप ऑन वर्किंग ऑन दिस, a fourth stage comes in, and that's the stage of achievement where you are unconscious of your competence. अभी आपको सोचना नहीं है, अभी तो आपके अंदर से कॉम्पिटेंस ही निकल रहा है. And that's the confidence with which you should handle your engagement, that you are unconsciously competent. And most of us, we are unconsciously competent. मैं आपको कहना चाह रहा हूं, most of us, we are unconsciously competent, but unfortunately in the wrong areas. We are unconsciously competent in eating the right kind, in eating the wrong kind of food. हमें भयंकर कॉम्पिटेंसी है गलत तरह के खाना खाने की, और हम अनकॉन्शियसली वो गलत तरह का खाना खाते रहते. Some of us, we are unconsciously competent in not maintaining a body. Not maintaining a body. So if you really want success or the next level, then you have to bring into your system certain competency levels. और वो इस लेवल तक पहुंच जानी चाहिए कि जहां आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, लेकिन आपके थ्रू वो हो रहा है. You're not even aware, but you're competent. तो कुछ चीजों में हम इनकॉम्पिटेंट है और हमें अवेयरनेस भी नहीं है. फ्रॉम देयर मूविंग ऑन टू कि अरे यार इसमें मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, ये अवेयरनेस आ गई. फ्रॉम देयर मूविंग ऑन टू अरे यार ये मेरे पास कॉम्पिटेंस नहीं है, मैं इसमें काम कर रहा हूं. टू मूविंग ऑन टू आई एम नॉट इवन अवेयर बट आई एम कॉम्पिटेंट. कि माँ देखो घर में जब काम करती है तो शी इज नॉट इवन अवेयर दैट शी मेक्स सच वंडरफुल फूड. वैसे चलते फिरते खट 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 मसाला डाला, ये डाला वो डाला, खाना रेडी, एकदम जबरदस्त खाना रेडी हो गया. शी इज अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट. Unconsciously, she's not thinking about it, it is happening. Some of you are unconsciously competent in getting angry. Unconsciously competent. जबरदस्त काबिलियत है गुस्सा होने की, तुम्हें मालूम ही नहीं है. ओहो. But sir, awareness of incompetence as confidence लो हो सकता है ना, but awareness of incompetence से confidence हाँ होगा ना. जब हम देखो, आपका दो सिचुएशन है. नॉन अवेयरनेस ऑफ इनकॉम्पिटेंस एक सिचुएशन ये है, एक है अवेयरनेस ऑफ इनकॉम्पिटेंस. ठीक है. नॉन अवेयरनेस ऑफ इनकॉम्पिटेंस ये एक ब्लिस है, मतलब वो इग्नोरेंस है. आप एक इग्नोरेंट ब्लिस में रहोगे कि आपको लग रहा है ब्लिसफुल है, लेकिन वो इग्नोरेंटली आप उस अवस्था में हो, ये डिजास्ट्रस है.
कभी बबल फटेगा मालूम नहीं, राइट? तो ये आप उस अवस्था में हो जहां आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो कि हाँ सब ठीक है, लेकिन ना आप अच्छे हो और ना आप उस नॉन अच्छाई के बारे में आप कहीं अवेयर हो। फिर आप सेकंड अवस्था में आते हो जहां आप जागरूक होते हो अपने इनकॉम्पिटेंस के बारे में। वहां आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है, अरे यार इसमें तो मैं बड़ा कमजोर हूँ। एंड यू हैव गॉट राइट, मानसी, बट दैट्स द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट ना। सो हाउ डू यू बिल्ड इन कॉन्फिडेंस? when you prepare for that, when you practice that, when you build in that confidence, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो कहीं पर भी आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, कहीं पर भी, इट इज बिकॉज समवेयर यू फील योर कॉम्पिटेंस इज लेस। तो हमने उसमें प्रिपरेशन करना है, दैट्स इट। एंड दैट्स अ ग्रेट ग्रेट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। वही तो अच्छे बनते हैं हम। सो you got these 4 stages. So if you really want to be great in what you're doing, you got to ensure that you work on taking your confidence level up, and for that you got to bring awareness. So हर दिन सोचो, बैठ के 5 मिनट बैठो, कौन से एरियाज में मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। सो कम आउट ऑफ दैट फर्स्ट स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस एंड मूव ऑन। कितने ऐसे एरियाज है बिजनेस में, जब मैं मिलता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को, दे आर नॉट इवन अवेयर कि ये गड़बड़ी हो रही है, दे आर नॉट इवन अवेयर दैट ये कमी है। तो कोई कस्टमर टूट के जाता है, सडनली यू बिकम अवेयर। कोई टीम मेंबर छोड़ के चले जाता है, देन यू बिकम अवेयर। टिल द टाइम यू आर अनकॉन्शियसली इनकॉम्पिटेंट इन दैट एरिया। कोई बाहर वाला आता है, फिर आपको बोलता है, देयर सो मेनी, आई टेल यू, आपको ये आश्चर्य होगा, so many times when I, अभी तो मैं कम होता है, but in the past when I would go and visit offices, their toilets would smell, their toilets would really smell। मतलब आपको टॉयलेट पूछने की जरूरत नहीं होती थी, आप सूंघ के बोल सकते हो उस दिशा में होगा। एंड the people in the staff and maybe the owner, they are unconscious of their incompetence to keep the toilet clean। तो कोई बाहर वाला आता है और बाहर वाला आके बोलता है, अरे भैया ये क्या करके रखा हुआ है। दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर इनकॉम्पिटेंस कि यार हमारा कोई क्लीनिंग वाला बच्चा है नहीं, कोई डेप्यूटेड आदमी नहीं है, कोई उसकी जिम्मेदारी लेके नहीं रखा हुआ है, ये एक ब्लाइंड एरिया हो गया है। Then they consciously become competent, कि they consciously appoint somebody, take it, make it improve। उसका लिस्ट बनाओ, चेक लिस्ट बनाओ, रोज साफ होगा। And then a time comes where unconsciously it is not even thought of, it has to be like this, it is like this। आया पकड़ में। So आज मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, but this is what I had to share with all of you today। Did it make sense? Today's HM, was it making sense to all of you? दम कड़क, चलो। Now do something about this awakening of yours, Mukesh। Love you, Mansi। Love you, Shweta। Chalo, I'll see you next HM, and it was